हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखमा रिलेशन रा एमसीक्यू माने। तो स्टार्ट करमा। प्रीवियसली भी हमें किछि एमसीक्यू देखितना जेन जगह रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बाबदरे थिला। आउ भी किछि टॉपिक अच्छे जेंटा कि रिलेशन रा लाइक इक्विवेलेंस क्लास अच्छे, पार्टीशन ऑफ ए सेट अच्छे, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो वाला रिलेशन अच्छे, एंड स्पेशली जेन हमर केतेटा इक्विवेलेंस क्लास काढी पारमा और यू कैन से दैट केतेटा इक्विवेलेंस रिलेशन काढी पारमा कोनसी गुटे सेट रो से टाइप रो भी किछि क्वेश्चन अच्छे। तो देखमा जेन जेन टाइप रो क्वेश्चन आसबा आमे तार बाबद रे भी टिके डिस्कशन करदम। So first question tell let we have a set A with 1, 2, 3 elements and we have a relation R such that it contains 1, 2, 2, 3 and 1, 3. तो यदि हमें देखी पारमा ए जगह रे 1, 2 अच्छे, 2, 3 अच्छे and 1, 3 अच्छे। तो 1, 2 सेकेंड एलिमेंट इधर फर्स्ट एलिमेंट समान, तो इधर फर्स्ट और थर्ड टा समान होते कथा relation which is belongs to the relation R. So you can say that this is a transitive relation, but it is not reflexive and not symmetric. Reflexive can be like 119 or 229 or 339. So it is not reflexive. Symmetric can be like 12 or 219. So it is not symmetric. H आमे कहि परमा रीजन जदि मुद्दे वाला लगी हमें HUF 11 does not belongs to R, so it is not reflexive. एटा हला रीजन दिया है। तो हमको तो ए जगह रीजन देवार लाइन पड़े एमसीक्यू क्वेश्चन रे जस्ट हमको टिक चिन्ह देवार ले पड़वा कि कौन सी गुटे आंसर कहवार के पड़वा, तो आवर आंसर इज सी। ठीक है, तो ए जगह आसला हमर नॉट रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक जस्ट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक कैंसिल लगी नहीं है एच वी हैव 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 does not belongs to R. So it is not symmetric. And जेहेतु 1, 2 अच्छे, 2, 3 अच्छे and 1, 3 अच्छे, so it satisfies the property of transitivity. So you can say that it is transitive relation. Next question ने क्या आसमा? Next question रे अच्छे, let R is the largest equivalence relation on a set A and S is any relation from on set A. If R is the largest, if R is the largest equivalence relation, then R contains the every elements of A Cartesian product A, or you can say that R is equal to A Cartesian product A. A Cartesian product A रे जेतेडा एलिमेंट थिबा सबु सेही रिलेशन रे थिबार कथा केंत लागि R is an largest equivalence relation. तो सही एबे सही ए रे आमे यदि कोनोसी भी गुटे रिलेशन टे बनामा S must be subset of A Cartesian product A. हमर पाखे रिलेशन रा डेफिनेशन काना, इट इज सबसेट ऑफ A Cartesian product B. मो रिलेशन रा सबसेट काना थिला, दैट इज RB any relation, then RB सबसेट ऑफ A Cartesian product B. जेतु इस जगह रे A भी A है, B भी A है, ऑन A काढू छु, सो A Cartesian product A रो सबसेट इदिबा S. So H A Cartesian product A is equal to R as it is the largest equivalence relation. So S is subset of the equivalence relation R. S J is subset. Now the next question: if R is a relation on the set this 1 to 9 and X relate to Y such that Y is equal to 3X, then मुझे देखो हमें X is equal to 1, इस जगह मुझे दे X is equal to, हमको देखिए Y is equal to 3x. If x is equal to 1, y is equal to 3. If x is equal to 2, y is equal to 6. If x is equal to 3, y is equal to 9. If x is equal to 4, y is equal to 12. But it is not in the set. And like 12 ta set A re nahi na. So our relation will be relation ta kana ache? Relation ta hala 1, 3, 2, 6 and 3, 9. So it hala our relation. जदि देखमा एबे कौन सी जगह रे नै ना, सो आवर आंसर इज नॉन ऑफ दिस आवर आंसर. बट
जदि जगह आर जगह आर इनवर्स देता तो ये आम उल्टे देता आर इनवर्स इज इक्वल टू 1 3 अच्छे सो 3 1 6 2 and 9 3. So this is our R inverse of the relation R, which is as same as this B. यदि R inverse देता तो B ही देता, यदि जेतु R देचे it is none of these वाला option. Next question टा हला R is a if R is a relation on set 1 2 3 and given by R is equal to 1 1 2 2 3 3. हमें कोई पर this is the smallest. This is one is the smallest equivalence relation on R. ओके इतना क्या हमें कोई पर इधर पार्टीशन भी हमें कोई पर मा पार्टीशन टा हला सेट 1 सेट 2 एंड सेट 3 इटा हला सेट रा पार्टीशन हमर रिलेशन रा पार्टीशन. So we can say that it is all three option. It is reflexive, symmetric and transitive also. हमें चेक भी करी पर मा 1 1 2 2 3 3 अच्छे so it is reflexive relation. 1 1 रो इंटरचेंज कर दमा न टर्म मान को सही 1 1 आवा 2 2 के इंटरचेंज कले सही 2 2 3 3 के भी इंटरचेंज कले सही 3 3 so it is symmetric relation और transitive property भी satisfy करवा. That's why it is an equivalence relation. इस अगर equivalence तो नहीं दे all three option देचे so the answer is all three option. अब उतर equivalence उतर partition टा है 1 2 and 3 अलग अलग. Okay, now the next one. Let we have a set A containing A, B, C, D. Then R is a relation. It is reflexive नहीं हुई. It's not reflexive. A नहीं ना, B नहीं ना, C नहीं ना, D नहीं ना. So it is not reflexive relation. Symmetric है क्या नहीं? Symmetric chances अच्छे. क्या थी लगी? A B अच्छे यार interchange कर दे ले B A अच्छे. तो symmetric है वा. And A के interchange कर ले A अच्छे. A B के जब हमें interchange कर दमा B A आसवा relation रे अच्छे. तो and A के जब हमें interchange करमा सही A है वा. So that's why it is symmetric. Problem टा है transitive होगा. Symmetric टा हमें कोई चुप. अगर वो option है जो symmetric and transitive only will लिखे. First option. Symmetric and transitive only will लिखे. जब हमें अगर देखमा तो A B अच्छे B A अच्छे so this implies A थीवार कथा अच्छे A belongs to R but इतना कि यदि मैं उल्टे देमी यदि मैं कहनी B A अच्छे and A B अच्छे but B does not belongs to R but B does not belongs to R and it is not transitive relation. Transitive nahi way, it is only a symmetric relation. So our correct option is C. Eve next question क्या असमा? Next question टा हला if A is set 1 2 3 इस type रो question बहुत टेस्ट है 1 2 3 वाला. Then the relation R which contain only 2 3 order pair. Then on set A is neither symmetric not reflexive. Reflexive nahi way, symmetric nahi. तो जेहेतु इटा सिमेट्रिक देछे ई जगह देखो फर्स्ट ऑप्शन टा नहीं हुई सिमेट्रिक भी सेकंड टा नहीं हुई ट्रांजिटिव हेई पारे केंदि ले 2 3 अच्छे हमर पाखे ट्रांजिटिव सेटिस्फाई करवार लगी और ट्रांजिटिव लगे काना अच्छे हमर पाखे दुईटा एलिमेंट थिवार कथा 2 3 एंड 3 के स्टार्ट हेकरी किछि एलिमेंट थिवार कथा नाही न. तो जेहेतु ई एलिमेंट नै न आमे माने कि चलमा it satisfy the every property, every element on the set R, on the relation R, satisfy the transitive property. क्या लगे आमर पके एंता एलिमेंट नहीं ना जेंटा थीटा सेकेंडरी से ना आचे किंतु फास्ट कौन सी तीरे नहीं ना. That's why मत ई एलिमेंट और रहबार चांसेस नहीं. So this is only transitive. Now the next one. Next question is question 7. Let R be the relation on set A with containing 1 2 3 4 given by R is equal to 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. इतना कि जब मैं भल से लखमा टिके गड़बड़ हेकरी अच्छे तो हमें ताकि जब सजे करी लखमा. So let R is equal to
फास्ट 1 1 2 2 3 3 4 4 तो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए 1 1 2 2 गला 4 4 गला 3 3 गला रहला केते 1 2 1 3 एंड 3 2 यदि आम जगह देखमा 1 3 अच्छे 3 3 अच्छे जगह फास्ट 3 अच्छे जगह सेकंड 3 अच्छे जगह फास्ट 3 अच्छे तो 1 2 which is belongs to the relation R, so it is transitive relation. So transitive property satisfy करूचे and reflexive भी satisfy करूचे but देखो इथिर लगी reflexive है इटा जेतु satisfy कला odd term माने जेंटा अच्छे इथिर लगी transitive है but it is not symmetric. कैंति लगी 1 2 अच्छे 2 1 9 1 3 अच्छे 3 1 9 3 2 अच्छे 2 3 9 so it is not symmetric. तो not symmetric वाला जगह अच्छे not symmetric R is reflexive and transitive, so that's why the answer is E. Next question निके आसमा question number 8 देखो उचे let A be a set containing 1 2 3 then the number of equivalence relation containing 1 2 ई क्वेश्चन के आमे दुईटा वे रे करि पारमा से दुईटा वे हला फर्स्ट आमे कोई डायरेक्ट करूचे सेकंड आमे पार्टीशन वे रे करू ओके सो काना करि पारमा लेट वी हैव ए रिलेशन R यदि R टा इक्विवेलेंस रिलेशन हला तो इट रिफ्लेक्सिव यदि रिफ्लेक्सिव हला 1 1 अच्छे 2 2 अच्छे एंड 3 3 रहबा एंड जेहेतु 1 2 अच्छे 1 2 कंटेन करथिबार कथा कहूचे सिमेट्रिक हेबार लगी 2 1 दरकार so we can say that this is our first equivalence relation आगुटे इक्विवेलेंस रिलेशन में कहि परमे जेन एलिमेंट माने 9 सेटा हला ई एलिमेंट माने तो रहबा मोस्ट 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1 एते मिनिमम एलिमेंट रहबा कैंसिल लगी 1 2 कंटेन करथिबा बोली से कहिछ एबे नेक्स्ट जदि मैं कहमे आगुटे कोनसी एलिमेंट दोचे 1 3 यदि 1 3 देले मते 3 1 देवार के पड़वा एंड एबे जदि मैं ई दुईटा के एलिमेंट के देखमी 2 1 अच्छे 1 3 अच्छे सो 2 3 भी बिलोंग्स टू R हितिवार कथा सो दैट्स व्हाई 2 3 भी रहबार कथा यदि 2 3 रहला 3 2 भी रहबार कथा नथिंग बट द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ओके और यू कैन से दैट इट ए कैटेगरी तो हमर पखे टोटल दुईटा ही इक्विवेलेंस रिलेशन पामा व्हिच कंटेन द एलिमेंट्स 1 2 so we have total two equivalence relation which contain 1 2 आउटे हुए काना हमर पाके टोटल जदि तीनटा एलिमेंट जे कोनसी सेट रे तमे केतेटा इक्विवेलेंस रिलेशन बने पा मु पार्टीशन हिसाब कहू जे so our first equivalence relation will be by using partition समस्त के अलग अलग कर दमा 1 2 3 एवटे हवा किंतु ई जगह रे 1 टा 2 संगे रिलेशन रे नै 1 1 संगे रिलेट करूचे 2 2 संगे रिलेट करूचे 3 3 संगे रिलेट करू यदि ई जिनिस के बुझे नै पारवार इक्विवेलेंस क्लास वाला कांसेप्ट हमर थ्योरी पार्ट टा के भी जेकी से जगह रे हमें देखि पा आ गुटे रिलेशन आसी पारवा रिलेशन 2 इज इक्वल टू 1 टा 2 संगे रिलेशन रहबा आ 3 टा के अलगा करमा ई रिलेशन जेंटा हमर ई फर्स्ट रिलेशन होची इटा देन रिलेशन 3 आउटे काना आसी परबा इट इज 1 टा 3 संगे रिलेटेड रहबा आ 2 टा के हमें अलगा कर दिस इज आवर अनदर रिलेशन 4 टा काना रहबा 2 टा 3 संगे रिलेशन रहबा मींस 2 2 2 3 3 3 3 2 रहबा आ 1 टा अलगा रहबा दिस इज आवर अनदर रिलेशन आवर रिलेशन 5 टा असला तबे समस्त संगे रिलेशन रहे ई रिलेशन टा लाइक 1 2 and 3 so this is our 5 equivalence class 5 equivalence relation by the element 1 2 3 जे हमर पाके सेट ए अच्छे 1 2 3 तो हमें टोटल 5 टा इक्विवेलेंस क्लास काढी परमा सेही बेल नंबर वाला कांसेप्ट रूपे हमें जानि परमा जे ई जगह रे हमर टोटल 5 टा ही इक्विवेलेंस क्लास आसबा इक्विवेलेंस रिलेशन आसबा जेंथरे 1 2 कंटेन करूचे 1 2 केनो अच्छे ई जगह देखो 1 2 संगे रिलेट करूचे आ ई जगह रे 1 2 संगे रिलेशन रे
That's why we have total 2 number of equivalence relation containing 1. ଏବେ next question के आसमा question number 9 सही relation इस जगह रे देइछे इ relation ऊपर हमें discussion करितला above रे भी 1 1 2 2 3 3 which is the smallest equivalence relation on the set 1 2 3 इ जगह रे जेंटा हमें कहूछु relation 1 that is 1 in relation with 1 1 2 टा 2 संग relate करूछ और 3 टा 3 संग relate करूछ. This is the smallest equivalence relation. So इस जगह रे हमें कहि परमा 9 रे this is the equivalence relation. Okay, check भी करि परमा. Question number 10, S is a relation over the set R of all real number. It is given by AB belongs to S such that AB greater than is equal to 0. If AB greater than is equal to 0, तो आमर पाखे दुईटा पॉसिबिलिटी अछि. Either यदि A टा पॉजिटिव हैला then B must be positive. केतले पॉजिटिव 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 हवा then it is greater than 0 हवा. यदि A टा नेगेटिव असला, if A is negative then B must be negative. Then B भी negative हेतिबा. Okay, so एबे इता के नेकी देखमा जदि A relation रहउचन के नहीं, it is A square always greater than is equal to 0. So that's why it is reflexive. Symmetric हवा के नहीं, जदि A B relation रे रहउचन is belongs to R then it implies AB greater than is equal to 0. यदि AB greater than is equal to 0, this implies BA greater than is equal to 0, which is you can say that BA belongs to R. So it is symmetric. Symmetric transitive हवा के नहीं देखमा means मुझे यदि कहमी A B belongs to R, यदि हमें साधा रफ वर्क रे देखमा AB belongs to R, BC belongs to R, यदि हमें कहमा A टा यदि पॉजिटिव B भी पॉजिटिव हेतिबार कथा, यदि B पॉजिटिव हैला C पॉजिटिव हेतिबार कथा, तो AC पॉजिटिव 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 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. यदि A टा बाय चांस नेगेटिव हे गेला तो B टा भी नेगेटिव, और यदि B नेगेटिव हे गेला C भी नेगेटिव हबा. तो एबे से A रो नेगेटिव और C रो नेगेटिव से पॉजिटिव हेबे. That's why you can say that A and C belongs to also. That's why it is also transitive. So it is reflexive, symmetric and transitive. That's why it is an equivalence relation. Okay, now the next one, question number 11. In the set of integers, which of the following relation are not an equivalence relation? यदि not an equivalence relation कहिचे हमको पहला देखबार छै केन जगह रे less than, greater than, less than equal to, greater than equal to वाला concept अछि. जदि अच्छे तो एटा equivalence relation नहीं हो. क्या थी लगे ई सबू सिमेट्रिक केते बेला भी नहीं हो. जेहेतु सिमेट्रिक नहीं हो न इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो तो हमर फर्स्ट ऑप्शन रही अछि. तो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. बाकी हमें चेक करि परमो जे बाकीटा इक्विवेलेंस रिलेशन एबे दरकार नै न एमसीक्यू क्वेश्चन रे हमको खाली देखबार अछि केनटा करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट हम जेतु चेक कर देना it is not symmetric, so you can say that it is not equivalence class, not equivalence relation. Next है question number 12. Let we have a set A which contain 1 2 3. Consider the set R जेन जाय रहे छै 1 1 छै 1 1 2 2 3 3 1 2 छै 2 3 छै 1 3 छै. तो 1 2 second element last element समान अछि तो 1 3 थिवा कथा अछि. That's why it is also transitive and reflexive, but it is not symmetric. Okay, से कहिचे reflexive but not transitive नुहे से, neither symmetric not transitive नुहे से, transitive हो जे symmetric transitive नुहे से. तो only reflexive but not symmetric. सेटा हला फर्स्ट ऑप्शन टा. as it is reflexive ठीक अछि, symmetric नहीं हुए, transitive हवा. so correct ऑप्शन टा हला. Question number 13 this is the set S we define on the set of real number by the rule A relate to B if and only if A is greater than B, and if A greater than B, A greater than equal to B, जेहेतु equal to अच्छे, so we can say that A is
always greater than is equal to a निजन तो सब वाले समान है ना जेतु equal to symbol डा अच्छे जाएगा you can say that a belongs to R, so it is an reflexive relation. Reflexive. But it is not symmetric. Just take if A greater than is equal to B, we cannot say that A is greater. Cannot say that B is greater than is equal to A. It must be less than equal to A. So that's why it is not symmetric. Symmetric nahi. Transitive if A is greater than is equal to B and B is greater than is equal to C, then you can say that A is greater than is equal to C. So that's why it is transitive relation. So it is reflexive and transitive. Reflexive, transitive, B redich. Reflexive and transitive, but not symmetric. Okay. Now the next one, the maximum number of equivalence relation on set A. 1 to 3 just किछिटा क्वेश्चन आगरो 5टा इक्विवेलेंस रिलेशन बाहर करतला तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 5 ओके तो केनता करी काल ना ताकि हमें बाय कैलकुलेशन कहि परमा हमर पास गोटे बेल नंबर बोली बेल नंबर केनरे कैलकुलेट करसु दैट इज 1 यदि गोटे एलिमेंट अच्छे 1 एलिमेंट थिले 1 एंड 1 + 1 2 तीनटा एलिमेंट थिले 2 रु स्टार्ट करमा 2 + 1 3 3 + 2 5 यदि तीनटा एलिमेंट अछि हमर पाखे पांचटा इक्विवेलेंस रिलेशन पे परमा यदि चारटा एलिमेंट अछि 5 रु स्टार्ट करमा 5 5 + 2 7 7 + 3 10 + 5 15 पांचटा अछि 15 रु स्टार्ट करमा 15 5 20 27 27 37 37 एंड 52 equivalence class जो गुटे एलिमेंट अछि we have one equivalence relation यदि दुईटा एलिमेंट अछि we have two equivalence relation यदि तीनटा अछि 5 जे हमर आंसर है यदि चारटा अछि we have 15 15 इवन पांचटा अछि equivalence so the correct answer is 5 so next is that R be a relation on the set of natural number defined by if n यदि n divides m or you can say that m is multiple of n or you can say that m is multiple of n बोली कही पर so you can say that a always divides a निजे निज के तो सब डिवाइड करवा so that's why it is reflexive relation means a belongs to R, so it is reflexive. ठीक है now if A divides B यदि let me कहने 2 divides 4 but 4 does not divides 2 दुईटा 4 के डिवाइड कर किंतु 4टा 2 के डिवाइड नहीं करे 4 2/4 आमे बाहर करि पारम आमे 4/2 से ना बाहर करि पारम इक्वल टू 2 बट 2/4 नहीं आसे कौन से हमर नेचुरल नंबर और इंटीजर नहीं आसे तो a डिवाइड्स भी ठीक अच्छे बट b डज नॉट डिवाइड्स divide a so you can say that if ab belongs to R implies b does not belongs to R so that's why it is not symmetric okay so इस जगह रे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दीचे तो सिमेट्रिक वाला कांसेप्ट कटि जीवा सिमेट्रिक कटि गला इटा कटि गला नॉट सिमेट्रिक इटा हेबा चांस अछि इक्विवेलेंस तो नहीं हुए और आंसर इज दिस रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक चेक भी करि परमा इफ a divides b and b divides and b divides c then a also divides c and lagi यदि जगह में हमें a divides b means b is some multiple of a means some m into e
यदि b c की डिवाइड करछे तो वी कैन से दैट c इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ b। एबे मुझे b जगह रे ma इज इक्वल टू pma which is equal to pm into a multiple of बोले हमें कही ट्रांजिट अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, let a relation are defined by L relation if and only L is perpendicular मीन आमर पाखे रिलेशन टा जे परपेंडिकुलर तो हमें काने कहि परम let L1 let line 1 cannot be perpendicular to itself निजे निजर तो perpendicular नहीं one, it is only parallel to itself, so it is not reflexive. Okay, जदि L1 टा L2 के perpendicular हला, let this is line L2, so L2 also perpendicular to L1. L1 और L2 भितरे डिग्री टा है सजीवा 90 डिग्री, so L1 L2 टा जदि perpendicular है, if L1 is perpendicular to L2, so this implies L2 also perpendicular to L1, so it is symmetric ही पारबा। तो ऑब्वियसली जदि मैं ट्रांजिटिव रो कथा कहमी L2 संगे आगुटे परपेंडिकुलर काटमी दैट दिस इज L3 L1 और L3 भितरे L1 और L3 भितरे रिलेशन हला पारला सेटा केते बेले भी परपेंडिकुलर है नहीं परन, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नॉन ऑफ दिस वाला ऑप्शन पे नहीं है, सो इट इज ओनली सिमेट्रिक रिलेशन। एबे क्वेश्चन नंबर 17 रे काना दिछे लेट T बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द इक्विलिब्रियम प्लेन, रिलेशन टा दिछे कांग्रुएंस वाला कॉन्ग्रुएंट वाला रिलेशन दीजिए। तो ऑब्वियसली टी कौन सी भी ट्रायंगल निजर संगे तो कॉन्ग्रुएंट हेबे कैथले ताकर सब साइड और सब एंगल समान थिबा निजर संगे। तो T1 और वी कैन से दैट TI इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू TI, निजे निजर संगे कॉन्ग्रुएंट है, तो वी कैन से दैट कौन सी भी TI एंड TI बिलोंग्स टू R, so we can say that it is reflexive relation. Reflexive हवा symmetric हवा कि नहीं? Okay, let T1 and T2 belongs to R. Means T1 टा congruent होचे T2 संगे. So that we can say that T2 also congruent to T1. यदि T1 रो सबु एंगल और साइड टा T2 संगे समान अच्छे तो T2 रे भी सब साइड और एंगल तो ऑब्वियसली समान है ना, कॉन्ग्रुएंट केंदा करे। दैट्स व्हाई इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, we can say that T2 and T1 also belongs to R। एवरी मैं T1 T2 के आर्बिट्रेरी नो जो ना कि कोनो से भी गोटे पर्टिकुलर नै ना T1 T2 जगह हमें कोनो से भी वैल्यू पुट कर दे परमा, कोनो से भी ट्रायंगल पुट कर दे पर, so it is symmetric relation, symmetric होचे। It is obviously transitive भी हवा, so it is an equivalence relation। transitive कैसे लगी हवा यदि T1 और T2 ट्रायंगल टा congruent है and T2 और T3 ट्रायंगल टा congruent है belongs to R, so it is obvious that T1 and T3 are also congruent। the T1 रो सबु साइड और एंगल टा T2 संगे समान अछि, T2 रो सबु साइड एंगल टा T3 संगे समान अछि, तो ऑब्वियसली T1 रो सब साइड है वो एंगल टा T3 संगे भी समान। ओके, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एबे आसमा क्वेश्चन नंबर 18 से कहिचे कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली एंड आर बी डिफाइन एज ए रिलेट टू ए इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ऑब्वियसली जगह देखा खाली ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रखा दीजिए, तो रिफ्लेक्सिव ऑब्वियसली हवा निजे सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं हुए कैसे निजे निजर ब्रदर केवेन हुए निजे निजर भाई तो नहीं हुए। तो देखो अब बाकीटा काना होचे जे से कहि जे ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ओके, लेट मुई कहले ए टा बॉय है, ए इज बॉय एंड जी इज बी इज गर्ल। तो से बॉय टा बी रो से गर्ल रो ब्रदर ही पाला, किंतु से गर्ल टा केते बेले से बॉय रो ब्रदर ही परबा के मींस द बॉय इज यू कैन से दैट द बॉय इज ब्रदर ऑफ द गर्ल। ठीक अछि, किंतु से गर्ल टा से बॉय रो ब्रदर ही परबा के रिलेशन टा तो नहीं पारे कैसे लगी ई जगह रे
सिस्टर वाला कॉन्सेप्ट पले आसवा। तो जदि ए बी रिलेशन रे अछन बी ए रिलेशन रे थाई भी पारे नाई भी थाई पारे। जदि ए बी बॉय और बी बी बॉय देन रिलेशन रे रहो। बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट बी मस्ट बी बी मे बी ए गर्ल। मस्ट तो नहीं कही पारे, बी मे बी ए गर्ल, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके एबे ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव ले ट्राई करमा। एबे देखो ए इन रिलेशन विथ बी एंड बी टा रिलेट करूचे सी। तो जेहेतु बी टा ए टा बी रो ब्रदर है, बी टा सी रो ब्रदर है, तो ए मस्ट बी ए बॉय, बी मस्ट बी ए बॉय। सी टा जहाँ हेले भी चलो, सी जहाँ हेले भी चलबा, गर्ल्स हेले भी चलबा बॉय हेले भी चलबा। लेट बॉय ही गला यदि गर्ल्स हेले बॉय हेले किछि माने किछि अदर ऑप्शन नै ना, सेटा तो हबा ब्रदर है। तबे कम कहि परमे कि नै एटा सी रो ब्रदर है कहि परमा, केनले से एटा तो पिला है, एटा सी रो ब्रदर ही परबा। ओके दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव। So it is transitive but not symmetric. More option tahla. So next one 19. Very interesting question. For any real numbers x and y defined by x related to y if and only if x minus y plus root 2 is an irrational number. तो अभी जब मैं रिफ्लेक्सिव लगी देखिमे देखो आमर पाखे चार्टा ऑप्शन अच्छे रिफ्लेक्सिव हो कि नहीं देखो x माइनस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू मुझे एक्स एक्स देखुचे एक्स एक्स कैंसल आउट ऐसे गला सो इट इज ओनली रूट टू सो इट इज इरेशनल so it is satisfy for all, so you can say that x and x belongs to r, x जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर दे पारना so it is रिफ्लेक्स। जदि एंता देखमा जेहेतु रिफ्लेक्सिव हो गला ना सिमेट्रिक ऑप्शन रे नहीं ना गोटे तो ऑप्शन चूज करवार है ना सो रिफ्लेक्सिव हो गला सिमेट्रिक नहीं हुए ट्रांजिटिव नहीं हुए नॉन ऑफ दिस वाला ऑप्शन वाला भी कटि गले। बट एबे क्वेश्चन आसला सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव काहे नहीं हमको बाहर करवार नहीं ना एग्जाम रे तो हमें ऑप्शन टे चूज करले हला जेतु रिफ्लेक्टिव हो जाए फर्स्ट ऑप्शन चूज कर दे पर आके चूज नहीं करले भी हम। बट हमको जानबार है जे सिमेट्रिक क्या जे नहीं रीजन दे दा। तो रीजन लगी जदि मैं गोटे पर्टिकुलर एग्जांपल दे देमी ई जगह रे से कहै छै x माइनस y प्लस रूट टू इरेशनल हेतिबा। ओके आमे लेट मी गोटे चूज करनी एक्स वाई इज इक्वल टू लेट मुई चूज करूछे रूट टू एंड थ्री। ओके सो कण आसबा ई जगह रे रूट टू माइनस थ्री प्लस रूट टू दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू रूट टू इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल। बट वाई एक्स मीन्स थ्री एंड रूट टू जदि मुई पुट करमी जगह रे इट इज थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैंसल आउट हो गला इट इज ओनली थ्री इट इज इरेशनल। So that's why 2 root 2 3 अच्छे किंतु 3 root 2 9, so that's why you can say that it's not symmetric। ट्रांजिटिव होगा नहीं तार लागि भी गुटा हमको सही टाइप रो गुटे एग्जांपल देखबार के पड़वा। तो आपको काना दरकार x माइनस y प्लस रूट 2 इरेशनल होतबा कथा एंड y माइनस z प्लस रूट 2 इरेशनल होतबा कथा। हमको दरकार x माइनस जेड प्लस रूट टू रेशनल होता। तो जेड टा क्या हमें रूट टू नहीं जिमा जेड मस्ट बी रूट टू सो रेशनल आसी जिबा। सो हमें काना करम लेट x के नहीं जिमा रूट थ्री माइनस टू प्लस रूट टू। ओके रूट थ्री नहीं जगह थ्री माइनस टू प्लस रूट टू एंड इट हला x इट हला y एंड ई जगह रे इटा हला इरेशनल। ओके एंड इटा देखो
y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 ओके नहीं कि y के आम रूट 3 नहीं y जहाँ भी चलो सो इट इज रूट 3 तो ये आसीगला इरेशनल ओके जगह कौन आस देख 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 इरेशनल है रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 इटा भी इरेशनल है बट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 घटीगला एंड इट इज रेशनल जगह आम कौन नौ एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू रूट 3 एंड जेड इज इक्वल टू रूट 2 जदि आम नवा आम गोटे कंडीशन टे पामा जे एक्स माइनस रूट वाई प्लस रूट 2 इरेशनल वाई माइनस जेड प्लस रूट 2 इरेशनल बट एक्स माइनस जेड प्लस रूट 2 रेशनल so you can say that xz does not belongs to the relation R the rational it has a relation so you can say that it is only reflexive relation it is not symmetric not transitive एते ऑप्शन लिखवार नै न जेतु रिफ्लेक्सिव हो जो फास्ट रही सैटिस्फाई कर जो तो हम रिफ्लेक्सिव रे टिक मार देकरी आके पला जस्ट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी टा जानबार लागि जे नाही हुई कैंथले ओके so if a relation R on the set 1 2 3 be defined by R is equal to only 1 2 ये टाइप रो क्वेश्चन बहुत हुए 2 3 ना 1 3 थिला करि जो से समान टाइप रो क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव नहीं हुए सिमेट्रिक नहीं हुए नॉन ऑफ दिस भी नहीं हुए कैंथिले कि ट्रांजिटिव रिलेशन कैंथिले हमर 1 2 एलिमेंट अच्छे बट 2 संगे किछि नाही न तो एंता जदि नाही न तो किछि प्रॉब्लम नसे जदि थिले से आर एलिमेंट फर गला काना कुछ ट्रांजिटिविटी टा it belongs to R if जदि A B अच्छे and B C अच्छे if A B अच्छे and B C belongs to R then A C belongs to R here जदि A B अच्छे फरक नहीं पड़े तो कंडीशन नहीं ट्रांजिटिविटी नहीं भी बोली तो नहीं कोई तो जेहेतु खाली ट्रांजिटिव रिलेशन ओके एथिला हमर किछि एमसीक्यू ऑफ रिलेशन आउ भी जदि किछि क्वेश्चन आसबा करम प्रीवियसली जहाँ एमसीक्यू करा है किंबा जदि इतर बाबद रे रिलेशन बाबद रे जदि तमे थ्योरी जानबार लागि चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक भी दिया है तुम से जगह देखि पारबो एंड तार पीडीएफ भी तुम पाई जीवो डिस्क्रिप्शन ओके थैंक यू